Assalamu alaikum bachcha log. So this right here is May June 2020. Okay. So May June 2020, that's the alternative to practical. So this is the third paper that we are doing. 2022 inshallah we'll do as well. So stay tuned for that to the channel. So in this case, question number one, the student investigates the refraction of light by a glass block. She places the glass block on a sheet of paper and draws around the outline of the block. She uses a ray box to shine an incident ray onto the side AB as shown in figure 1.1. Take care, that's cool. We don't have a problem with that. The ray is incident at point E. All right. Draw normal to point E. तो हमने यहाँ पर let's draw it with the blue. हमने यहाँ पे बना दिया normal, perpendicular to the surface. ठीक है. नॉर्मल बन गया. मेक एंड रिकॉर्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो अगेन आप ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो रिकॉर्ड कर देंगे. मेरे ख्याल में ये 40 डिग्रीज के आसपास है. मे बी, आई डोंट हैव अ प्रोट्रैक्टर. ठीक है. द रे इज रिफ्रैक्टेड इनटू द ब्लॉक एट एन एंगल ऑफ 25 डिग्रीज. ठीक है. सो ये 40 डिग्री से कम होकर थोड़ा सा कितना हो जाएगा. मे बी दैट्स अ बिट टू मच. मेरे ख्याल में मैंने नॉर्मल भी गलत बनाई है. तो लेट मी जस्ट रीड्रॉ दैट. Yep, that's definitely better. This angle right here seems a little less than 45, so hence, and the angle 25 that looked more like 30. Yep, this looks more like 25. ये 25 degrees आपका angle of refraction है. Continue the ray until it meets the side CD of the block. Label the point where the refracted ray meets the CD with F. ठीक है, so we essentially have to continue this all the way till point F. ठीक है, point F पे ये meet करिए to the side CD. Describe how the student accurately traces the path of light emerging from the block through CD. तो बहुत आसानी से हम इसको जो है वो फिगर आउट कर सकते हैं अगर आप इस so I'll post a video of this experiment, so you can easily follow the experiment and say कि अच्छा ठीक है. Essentially what we do is reflection or refraction के experiments may we use pins. So essentially what you're going to do is you're going to observe the light. So let's assume that this is you. So yeah, I've tried to draw an eyeball, maybe. Take it. So I'm not exactly sure what that is. So yeah, someone's trying to observe it. ठीक है, आप क्या करेंगे? You're going to try and observe it from the other side CD, and you're going to place a pin, ठीक है, and then a second pin to mark the direction in which you can see the ray box. ठीक है. अगेन जिसने ये एक्सपेरिमेंट करा होगा उसको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा. जिसने ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया होगा उसको जाहिर सी बात है नहीं समझ में आएगा. तो आई पोस्ट लिंक फॉर द experiment of refraction as well, so you can watch that first and then you can come back to this question and solve it. Okay, only and only if you watch that video will you be able to understand what's going on here. Okay, so essentially what we do is place pins. Okay, you need to place pins. Okay, and in the direction नहीं, in the direction नहीं लिखते हैं. So you need to place pins where the light ray can be observed. Pins हम कह देते हैं कि अब जाहिर सी बात है pins बहुत करीब तो नहीं रखेंगे ना. तो pins must be maybe 6 centimeters away from each other. ठीक है. And then we can say remove the pins and draw a line
connecting the pinholes with F. Pinholes with F. ठीक है, ये जो F हमने बनाया है इससे हम इन पिनहोल्स को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो उससे हमारे पास एंगल आ जाएगा. ठीक है. So like I said, go watch that video first if you haven't already. Even if you know the experiment, still go watch it. Maybe there might be a few details which you've missed the last time that you did that experiment. तो आप उस वीडियो को एक बार जाके देखें और फिर ये क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करेंगे तो आपका काम जो है वो रिलेटिवली काफ़ी आसान हो जाएगा. ठीक है. All right, a student investigates the terminal velocities v of small steel spheres at different diameters through the oil. Take care, that's cool. A steel sphere falling through oil reaches terminal velocity when the weight of the sphere is balanced by the drag force of the oil acting upon the sphere. Student measures blah blah blah. He places 2 rubber bands above one. ठीक है, तो markers लगा दिए, drops blah blah blah. ठीक है. So again, especially we discussed this in the last paper that you don't necessarily have to read through everything. A lot of what you have in a P4, a lot of what's written in a P4 is kind of futile information, right? तो इतने किसी खास काम की नहीं है. It's trivial. So calculate T average. Again, average निकालने के लिए आपको लिखा तो नहीं होना चाहिए ना. You should know कि the average is what you add all of them and then divide by 3. So 0.83 plus 0.69, that should be how much? 1.52 plus 0.6, 1.52 plus 7, 0.216. Yep, 212. Sorry, my bad. So divide by 3. So this right here must be 2.12. No, 02. 2.12. All right. And then we divide this by 3. So I'm going to get 0.7 और फिर 2 को divide by 3 करेंगे तो 0.06 आना चाहिए. तो we'll just round that off to 7. सही है ना. तो 0.707 maybe. अगर हाँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 SF है तो probably you'll put that as 0.71. So just why T average is not recorded more than 2 decimal place. Again, more than 2 decimal places जो है वो आपके पास reaction time जो है it's not possible कि you react in time to measure up to the third, up to milliseconds. Milliseconds में आप your reaction is almost 2 to 300 milliseconds. आपका reaction time में 2 to 300 milliseconds होता है. तो you cannot record correct to 3 decimal places or essentially a millisecond. सही है, तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि reaction time too large. सही थी. तो हम लिख देते हैं कि आपका रिएक्शन टाइम जो है वो क्या है, काफ़ी बड़ा है. तो इस वजह से more than 2 decimal places is completely useless. Calculate the average velocity. ठीक है. तो अगेन ऊपर इतनी जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है यहाँ से. तो 10 डिवाइड बाय 0.71 करते हैं तो मस्ट बी अप्रॉक्सीमेटली 1.4 मेरे ख्याल में. सही है. Calculator. Do I have a calculator with me? Yep, I do. मेरे ख्याल में 1.4 आना चाहिए. तो 10 divided by 2.12 divided by 7. Remember initial value लेनी होती है. तो it's going to be 33.01 आंसर आ रहा है. 1.4 आना चाहिए. अच्छा नहीं, my bad. Divide by 3. 14.1. ओके हाँ 14.1 सही है. सो 14.1 सेंटीमीटर्स आपका आंसर आएगा. मे बी 14.2 क्योंकि 14.15 आ रहा है. सो यू आर गोइंग टू आंसर 14.2. ठीक है. या
अगर 0.71 करते हैं तो फिर 14.1 हो जाएगा, बट अगर आप एक्चुअल वैल्यू लेते हो तो इट्स गोइंग टू बी 14.2. Calculate d square for the sphere. Record your answer to the nearest whole number on the answer line and in table D2.1. So, student measures the diameter d of a steel sphere. The diameter of the sphere is 7.82. Take care, that's cool. So, calculate d square for the sphere. तो हम डी स्क्वायर निकाल लेते हैं. 7.82 मिलीमीटर्स का क्या करना है, स्क्वायर ही करना है. ठीक है, तो कितना था, 7.82. यप, सही मिलीमीटर स्क्वायर में. तो 7.82 का स्क्वायर, अगर I'm gonna have to use a calculator. 7.82 का स्क्वायर इज हाउ मच, इट्स गोइंग टू बी 61.15. तो आप 61 मिलीमीटर्स ले लें या 61.2 ले लें. अगेन ऊपर अगर आपने जो है वो 2 SF के ऊपर यहाँ पर आंसर दिया है, तो आई थिंक यू शुड गो विद 2 SF फॉर द रिमेनिंग आंसर्स एज वेल. ठीक है, तो लेट्स मेक दिस 14, लेट्स मेक दिस 61. अच्छा, नेम अ प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द डायमीटर ऑफ द सील स्फीयर टू अ प्रिसिशन ऑफ 0.01 मिलीमीटर्स. तो दैट्स योर वर्नियर कैलिपर. ठीक है, वर्नियर कैलिपर. आप माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज भी लिख सकते हैं. ठीक है, so either one is fine. Suggest why the top rubber band is not placed close to the surface of the oil. Surface of the oil के करीब अगर होगा तो जाहिर सी बात है टर्मिनल वेलोसिटी नहीं होगी. टर्मिनल वेलोसिटी रीच करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा ना. So initially when it's near the surface of the oil here, it's still accelerating. It may be somewhere around here आपका total upward force downward force equal होगा और फिर वो terminal velocity achieve करेगा. तो if you want to measure the terminal velocity, इससे ऊपर rubber band, तो it doesn't make sense to put the rubber band too high. So we are going to say that the steel ball, are we using steel balls? Yep. So suggest why top rubber band is not placed on the surface. Terminal velocity not reached. ठीक है, तो हम यहाँ पे एग्जामिनर को आइडिया दे देंगे somehow कि टर्मिनल वेलोसिटी अभी रीच नहीं हुई है. Student repeats the procedure using steel spheres of different diameters. His results are shown in figure 2.1. Cool है, तो अभी 7.82 वाला तो हमारा टाइम एवरेज जो है वो 0.71 आ रहा है. वेलोसिटी 14.1 आ रही है. डायमीटर स्क्वायर जो है वो 61 आ रहा है. ठीक है, कोशिश करेंगे जब आप वैल्यूज कैलकुलेट कर ही रहे हैं तो याद भी रखें. Using draw a graph of V on the y-axis and D square on the x-axis. ठीक है, so over here how many boxes do I have? Okay, that's better. So 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 on the y-axis. 1 2 3 4 5 6 7. 7 on the x-axis. The y-axis पे V है. So 8 boxes from 2 to 14. So I'm gonna have to go with 1 box is 2 units. And 7 boxes from of 10 to 61. So again I'm gonna have to go with 1 box is 10 units. ठीक है, क्योंकि 10 से लेके 61 सब आना चाहिए. So I'm gonna go with 2 4 6 8 10 12 and 14. I don't think we have a value more than 14. 14.1 है बस, तो ऊपर 16 मार्क करने की ज़रूरत नहीं है. Then you've got 10 20 30 40 50 and 60. ठीक है, this right here is d squared in millimeter squared. Again, of course, label your axes. This right here is velocity in meters per second. Yeah, millimeters per second. Centimeters per second actually. Cool. So this right here is centimeters per second. 14.161. अच्छा, नीचे से स्टार्ट करते हैं. So 2.4 and 10.
तो 10 पे कितना है? That's 2.4. Again, circle your marks. Then 19 and 4.5. 19 यहाँ पर आएगा 4. 4.5 is going to be somewhere around here. Then you've got 26 and 6.1. 26 is going to be here. And 6.1 in the middle. ऊपर वाला 6.0 है, नीचे वाला 6.2 है. Sorry, other way around. ऊपर वाला 6.2 है, नीचे वाला 6.0. And then you've got 11 and 48. So 48 पे we've got how much? We've got 12, so we should have 11. ठीक है जी. And then we've got 14.1 पे 61. So 16.1 पे 14.1 आ जाएगा. So somewhere along this. Alright, so I'm thinking that it should pass through the origin. जाहिर सी बात है क्योंकि अगर velocity ही अगर distance I'm not sure. ठीक है चलो let's see. लाइन बनाते हैं. Yep, I think this is a fairly sufficient line. ठीक है, but it's not passing through the origin. All right. Let's start off at the origin. I like this line. It's passing through which points? It's passing through this point right here, this point right here, and this point right here. तीनों points के through pass करे. ये point ऊपर है और ये point relatively नीचे है. So yeah, I'm happy with this line of best fit. ठीक है. Describe the relation between v and d squared. So of course it's going to be क्या कहते हैं, directly proportional. ठीक है. Okay, so G part 1. Human reaction time errors occur when using a stopwatch. Using table 2.1 on page 4 to suggest, use table 2.1 on page 4 to suggest why the average time TAV for the smaller sphere is more accurate than for a larger sphere. Take care, so that right there should be fairly simple. एंड उसका रीज़न जो है वो क्या है? उसका रीज़न जो है वो बहुत ही एक सिंपल सी चीज़ है कि भाई अगर हम ऊपर जाके टेबल पे देखें, so if we look at the table we see that a larger diameter will lead to a larger velocity, larger terminal velocity. Now अगर आपका diameter ज़्यादा है and you have a greater terminal velocity, जाहिर सी बात है when your objects move faster आपका reaction time will come into play more. ठीक है, मीन्स उसके लिए रिएक्ट करना मुश्किल हो जाता है. when things are moving fast उसके लिए रिएक्ट करना मुश्किल हो जाता है एंड रिएक्शन टाइम के एरर्स जो है वो काइंड ऑफ क्या हो जाते हैं, एम्पलीफाई हो जाते हैं. सही है. So essentially what we can say over here is describe the relation. So यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, the relation because it's passing through the origin. It's क्या कहते हैं, it's a straight line passing through the origin, so directly proportional. ठीक है. And then we can say कि भाई very simple. The next part है G part 1. Human reaction time errors occur when ठीक है blah blah blah. So what we can say is we can simply say that alright, because larger diameters have greater terminal velocity,
hence more difficult to measure time. Take care. Yeah, you can say greater error. It's more difficult. You can either say more difficult or you can say greater error due to reaction time at higher speeds. So at higher speed आपके reaction time से जो error produce होगा, that's going to be a little more. So just one modification to the apparatus that produces more accurate timings. तो जाहिर सी बात है आप जो है वो so what you can do is you can do a couple of things. One of the things that comes right away to mind is कि आप distance increase कर दें दोनों rubber bands का 10 centimeters की जगह पे 20 centimeters use करें. ठीक है, so I think that should be fairly sufficient. Okay, what we can do is we can use a greater increase value of t. Just simply write increase the value of t. ठीक है. The student removes steel spheres from oil at the bottom of the cylinder by dipping a magnet attached to a length of the string. Suggests why this procedure does not work if the spheres are made of copper. So copper is non-magnetic. ठीक है, copper is not magnetic. Copper जो है वो magnetic नहीं है. So you cannot attract it with a magnet. ठीक है, moving on. We have question number 3. Student investigates blah blah blah. Read the voltmeter shown in figure 3.2. Record your answer on the answer line. So this right here is going to be 1.48. Say 1.41, 1.42, 1.43, 4, 5, 6, 7, and 8. So it's going to be 1.48 volts. All right. Student uses 2 more combinations. Her results, the resistance, calculate the column headings, complete the column headings. तो सर्किट के अंदर V volts है, potential difference है. So this right here is going to be measured in volts. ठीक है, this right here is going to be measured in amperes. Now you don't have to write down the whole thing. This right here is going to be measured in ohms. आप इनके symbols लिख दें वो ज़्यादा बेहतर रहेगा. I think writing the symbols would be better. So V volts जो है वो volts, again the symbol for volts is V as well. Symbol for amperes is A, and the symbol for R, or the unit, not symbol. Why am I using symbol? So V is the symbol for volts. V is also the unit, right? Potential difference V आपकी quantity है, उसका unit क्या है? Volts. Current आपकी quantity है, and unit क्या है? Amperes. Amperes का जो symbol है वो A है, and ohms का जो symbol है is this Greek letter capital omega. Sorry. So this right here is, so circuit 1. Up calculate the resistance R of the combination of resistors. ठीक है, so circuit number 1. Circuit number 1 क्या है? ये रहा. This is circuit number 1. Circuit number 1 में you've got I, you've got potential difference to be 1.48. ठीक है, तो V is equals to IR, तो R निकालने के लिए आप डिवाइड करेंगे. So 1.48 divided by 0.13. All right. So 1.48 divided by 0.13 should be equals to 11.4. ठीक है, ये 11.4 ohms आ गया. Calculate the resistance R. So 1.46 divided by 0.25 is going to be 4, 5.
5.84, if I'm not wrong. Yeah, should be 5.84. And 1.46, anything divided by 0.25 is essentially multiplied by 4. So the way I go about doing this would be, okay, 1 multiplied by 4 4 होता है, 0.4 multiplied by 4 1.6 होता है, तो 5.6 होगा, and then 6 multiplied by 4 should be 24, तो 24 उसके अंदर ऐड हो जाएगा, 5.6 plus 0.24 gives me 5.84. And then you've got 1.46 divided by 0.58. अब जाहिर सी बात है ये तो कैलकुलेटर से ही होगा. The answer is 2.52. ठीक है, so this right here is going to be 2.52. So ये भी complete हो गया. Alright, so part C says theory suggests that for identical resistors, the resistance of the resistor combination in circuit 1 is double the resistance of the resistor combination in circuit 2. State whether your results support this theory within the limits of experimental accuracy. Give a reason for your answer. So I guess yeah, definitely. ठीक है, हम कह सकते हैं कि yes, within limits it should be. Our experimental results do suggest yes, it's going to be double. उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि 5.84 का डबल क्या होता क्या है? 5.84 का डबल शुड बी 5.8 का डबल 11.6 होता है, तो 11.68 हो जाएगा, विच इज़ मे बी ऑलमोस्ट ट्वाइस. ठीक है, ऑलमोस्ट ट्वाइस है, यस. तो इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डिफरेंस. ठीक है, यूजुअली जब हम एरर्स देते हैं तो दैट शुड बी समवेयर अराउंड 5 to 10%. ठीक है, दिस इज़ लेस दैन this difference right here is less than that. So as long as it's something around or less than 10%, तो वो experimental accuracy या limits of experimental accuracy में it should be just fine. ठीक है, so results do support the theory. Results do support the theory as the values are close to each other. ठीक है जी. And then the question says, give one precaution that the student takes so that her readings of current and voltage are as accurate as possible. तो जाहिर सी बात है, don't run your circuit for way too long. सर्किट बहुत देर तक चलने से क्या होता है, सर्किट जो है बहुत देर तक चलने से सर्किट हीट अप हो जाता है. सो यू नीड टू कीप स्विचिंग ऑफ द सर्किट. ठीक है, to keep switching off the circuit as it will get heated up. Switching off the circuit between readings. मेरा ख्याल में ये चीज़ जो है वो हम हर पेपर में, इससे पहले वाले 2 पेपर्स में भी, इसमें भी अगेन हम यही चीज़ जो है वो यूज़ कर रहे हैं. So again, a very important concept. Question number 4. A student investigates the rate of cooling of thermometer bulbs under different conditions. Figure 4.1. Record the answer line. Record on the answer line. Table 4.1. The temperature shown at T is equals to 0. So temperature में क्या show हुआ है? जाहिर सी बात है 80 और 90 के बीच में 10 divisions हैं, so this right here must be 85, so that makes our current level 86 degrees Celsius. Unit already दिया हुआ है, so this right here is going to be 86 degrees Celsius. ठीक है, blah blah blah, so no need to read the question below. State which thermometer cooled more quickly at the start of the investigation. Justify your answer by referring to the readings in 4.1 on page 9. So of course the first one, P, वो जल्दी cool down हुआ है. Why? Because initially यहाँ पे जो difference है, that's a difference of 12. यहाँ पे जो difference है, that's a difference of 34. Big difference. So P cooled much faster
initially. ठीक है, एंड देन वी कैन से कि अच्छा ठीक है 15 डिग्री सेल्सियस कम हुआ, ऑलराइट, और यह 17 डिग्री सेल्सियस कम हुआ, तो एट दिस पॉइंट वी कैन से कि हाँ क्यू का जो है वो रेट ऑफ कूलिंग इंक्रीज होना शुरू हो गया, पी का जो रेट ऑफ कूलिंग है वो कम होना शुरू हो गया. सो बट इनिशियली पी वाज मच फास्टर, हेंस वी आर गोइंग टू से पी कूल्ड मच फास्टर as difference in temperature at time t is equals to 0 to t is equals to 30 in temperature for P is 34 degrees, while for Q it is only 12 degrees Celsius. ठीक है, तो P में जो है वो आपके पास 34 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ रहा था, जबकि Q में जो है वो सिर्फ कितना आ रहा है, 12 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ रहा है. सो इनिशियली इन द फर्स्ट 30 सेकेंड्स, यहाँ पे आप ये चीज़ टाइम के स्टैम्प्स जो है वो देना ज़रूरी है यहाँ पे. So just two conditions that must be kept same to ensure that a fair comparison is made between the rates of cooling of the two thermometers. दोनों का स्टार्टिंग टेम्परेचर जो है वो सेम होना चाहिए और सिमिलर होना चाहिए, अलग अलग रूम्स में नहीं होने चाहिए, सारी सी बात है, सेम रूम में होना चाहिए, सो दैट योर एम्बिएंट टेम्परेचर इज द सेम एज वेल, एंड सेम टाइम इंटरवल होना चाहिए विच इज़ कम्प्लीटली फाइन. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरवल्स हैं वो 30 सेकेंड्स के इंटरवल्स हैं. सो वी कैन से कि सेम इनिशियल टेम्परेचर and we need to keep them at the same. Now the correct technical word for this is going to be the same ambient temperature. Say that would be the more technical way of saying this. वरना आप सिंपल लिख सकते हैं they should be in the same room. They, as in both P and Q, should be in the same room. एंड सेम रूम में होने का रीज़न क्या है, सेम रूम में होने से फ़र्क ये पड़ेगा कि दोनों का जो स्टार्टिंग टेम्परेचर है वो तो सेम है, बट दोनों का सराउंडिंग टेम्परेचर जो है वो भी सेम है. अब अगर आप एक को हीटर के पास रख के बोलें कि भाई उसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ जो है वो कम है, अगर एक को एसी के पास रख के बोलें कि भाई उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ जो है वो ज़्यादा है, दैट वोंट बी फेयर, राइट. वी नीड समथिंग दैट मेक्स इट अ फेयर कंपैरिजन. ठीक है, सो दैट एसेंशियली दीज टू कंडीशंस शुड वर्क जस्ट फाइन. Alright, so I think that's it for this paper. So inshallah, I'll see you in the next one. Take care, kids. Tata, bye bye, Allah Hafiz. Bars out.